Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the suboccipital triangle, which is a triangle bounded by muscles present on the posterior aspect of the neck, just below the external occipital protuberance. So this is the suboccipital triangle on both of the sides, and will be bounded by the muscles definitely. And let's have a look at its boundaries and its contents. अच्छा, एक होती है इसकी suprolateral boundary, एक होती है इसकी suprolateral, एक होती है supromedial boundary, एक होती है इसकी inferior boundary. So let's have a look at its supromedial boundary. It will be bounded by the rectus capitis posterior major and some of its contribution will be by the rectus capitis posterior minor muscles. Rectus capitis and rectus capitis posterior major and rectus capitis posterior minor will be अच्छा rectus capitis cover जहाँ पे we know that is for the skull, the base of skull. So rectus capitis superior major and rectus capitis superior minor are forming its supromedial boundary. Supralateral boundary will be formed by the superior oblique muscle, and the inferior boundary will be formed by the inferior oblique muscle. So rectus capitis major, rectus capitis minor, superior oblique and inferior oblique are forming the boundaries of this suboccipital triangle on the back of the neck, just below the external occipital protuberance. Supromedially by the rectus capitis major, rectus capitis minor, and supralateral by the superior oblique, and inferiorly by the inferior oblique muscle. अच्छा, फिर बात जाती है अबाउट इट्स रूफ. सो इसका रूफ भी काफ़ी सारे मसल से कवर हुआ होता है. सो मीडियली इट्स रूफ विल बी कवर्ड बाय द डेंस फाइब्रस टिश्यू कवर्ड बाय द सेमीस्पाइनलिस कैपिटस मसल. एज आई टोल्ड यू, कैपिटस कवर जहाँ भी आएगा मतलब कि अटैचमेंट उसकी कहाँ से आ रही है, थ्रू द बेस ऑफ द स्कल आ रही है. एंड लेटरली अगेन देयर विल बी डेंस फाइब्रस टिश्यू कवर्ड बाय द longissimus capitis muscle and the splenius capitis muscle. So यहाँ पे cut हुए muscles to show us the suboccipital triangle bounded by the rectus capitis muscle, inferior oblique and the superior oblique muscle. So in this way the roof of this triangle is formed medially by the semispinalis capitis muscle and laterally by the splenius capitis and longissimus capitis muscle. अब let me tell you one thing, that in muscles की attachments को याद करना, memorize करना is not that important because that is never asked in exams. So rather we should know about the names of the muscles which are forming its boundaries and its roof and its contents, right? So these were the muscles forming its roof: the semispinalis capitis, the splenius capitis and the longissimus capitis. फिर बात जाती है अबाउट इट्स फ्लोर. तो उसके फ्लोर में यू नो कि इसके नीचे बेसिकली एट द बेस ऑफ द स्कल सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, या फिर आई शुड से एट द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कल सारी चीज़ें पड़ी, तो वहाँ पे हमें एटलस वर्टिब्रा, दैट इज द C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा नजर आती है. सो विल बी फाइंड द पोस्टीरियर आर्च ऑफ एटलस. पोस्टीरियर आर्च क्या होती है? वी नो दैट द फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर बॉडीज ऑफ स्पाइनस प्रोसेसेस, रादर दे आर हैविंग द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर आर्चेस. सो द पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस वर्टिब्रा विल बी फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ दिस suboccipital triangle, and along with that there will be the atlanto-occipital membrane, which is a kind of ligament joining the occipital bone with the atlas bone, the atlas vertebra. So this is a posterior atlanto-axial membrane and atlanto-occipital membrane and the posterior arch of the atlas bone, both of which are forming the floor of the suboccipital triangle. अच्छा, अगर कहाँ की कंटेंट्स की बात की जाए, सो दे विल फाइंड द थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिबल आर्टरी हेयर. सो जो वर्टिबल आर्टरी होती है आफ्टर इट्स ओरिजिन इट हैज़ 4 पार्ट्स, राइट. एक पार्ट वो होता है जो मूव कर रहा है थ्रू दीज foramen transverse radium, right, the foramina of the transverse processes of the cervical vertebra. वो होता है सेकंड पार्ट. जो वहाँ जो बिफोर एंट्रिंग द फोरामिना वो होता है थर्ड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट. और जो फोरामिना से बाहर जाकर एंट्री लेता है इनटू द vertebral canal या spinal canal, vertebral canal cancer you should call it. So that is actually the third part. So the third part which is यहाँ से वैसे जा रहा होता है towards the vertebral canal, तो उसका ये वाला portion, the third part will be seen here in this region, that is in the suboccipital triangle. Along with the third part of vertebral artery, we will also find the dorsal ramus या the posterior ramus of the C1 cervical vertebra, that is the suboccipital nerve. So suboccipital nerve का या फिर C1 cervical spinal nerve का हमें dorsal ramus भी इस region में नज़र आ रहा होता है. Along with that हमें यहाँ पे suboccipital plexus of veins भी नज़र आ रहा होता है. So these 3 are the contents of the suboccipital triangle. Number 1 is the third part of vertebral artery. Number 2 we have the dorsal ramus of C1 spinal nerve, and number 3 we have the suboccipital plexus of veins. So veins, nerve and artery, these 3 things are going to be here. So with this now we're done with the suboccipital triangle. We have seen its several boundaries, we have seen its contents, and we have seen its floor and roof वगैरह वगैरह. So Allah Hafiz, thank you, take care, bye.